So here we will have to prove that right circular cone of least curved surface area and given volume has an altitude equal to √2 times radius of the base. हमने कर्व surface area के लिए फॉर्मूला निकाला, दो वेरिएबल द आर एंड एल, एल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, स्टिल अगेन दो वेरिएबल. सो हमने वॉल्यूम इज गिवन वॉल्यूम, उसमें से एच का वैल्यू मिला वो सब्स्टिट्यूट किया, नाउ एक ही वेरिएबल में आ गया. सो फॉर अवॉइडिंग दैट स्क्वायर रूट सिंबल, तो कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम ही होगा, तो इसलिए हमने एक सेकंड, इसलिए हमने उसका स्क्वायर कर दिया. स्क्वायर करके उसके लिए फॉर्मूला एक फॉर्मूला आ गया. देन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव 0 करके हमने आर का वैल्यू मिला हमें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई आर, मीन्स आर इज इक्वल टू एच बाई √2, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2, मतलब आर इज इक्वल टू. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर अदर थिंग्स लाइक, मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए इसलिए मैं कुछ इधर से डिलीट कर रहे हैं. One second. Okay, so here, so हमें मिला था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2, और दैट यू कैन से दैट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू एच बाई √2, h by √2. Okay, and critical points are the points where the derivative is equal to 0 or undefined. Critical points, CP, critical points are the points where derivative dz by dr is equal to 0 or undefined. So dz by dr 0 at the point r is equal to h by √2. Then dz by dr is undefined. So here undefined का केस है क्योंकि इधर जब dz by dr निकाला उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको -18v² प्लस 4 पाई स्क्वायर r to the power 6 डिवाइड बाई r³ लिखा था. So this will be undefined when r³ is equal to 0. When r³ is equal to 0, that implies r is equal to 0, but that is not possible because radius 0 है तो उधर कोण ही नहीं हो जाएगा. That means आपका critical point is, therefore the point is, therefore r is equal to h by √2. Now at that point there may be different options. It may be local maximum, local minimum, or point of inflection. So we have to find the second derivative, that means d square z by dr square. So z dz by dr अभी हमें इधर मिला था 9v² - 2 by r³ plus that thing. So from उसमें से यूज करना, इधर अप्लाई करेंगे तो फिर से क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इधर ही अप्लाई कर देना. So -18v² constant, -18v² constant. Then r³ is r to the power -3. r to the power -3 है तो it is derivative d by dr, derivative of -3 r to the power -4 आएगा. So -3 divided by r to the power 4 आएगा. Then plus 4 pi square constant, r³ का 3r² आएगा. So 3 into 4, 12 pi square r². So आपको ये मिलेगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 18 into 3, 54 v² divided by r to the power 4
plus 12 pi square r square. So second derivative d square y by dz dr square at r is equal to h by root 2. नहीं ये तो r square is equal to h by 2 whatever the value दे देंगे तो 54 v square divided by h by root 2 to the power 4 plus 12 pi square h by root 2 square. Height is positive or whatever it is, something to the power 4 is positive. V square is positive, 54 is positive, the first term is positive. 12 is positive, pi square is positive, whatever h by root 2 uska square is positive. So it is always a positive quantity. It is always greater than 0. That implies Z is minimum at r is equal to h by root 2. Z minimum है तो उसका square root दा, that implies S is minimum at r is equal to h by root 2. So that implies r is equal to h by root 2 matlab h is equal to root 2 into r, and that is what we need to prove. Height altitude is equal to root 2 times radius of the base. That means altitude, this implies h is altitude is equal to root 2 times radius of the base. That means हमने यही प्रूफ किया है कि कर्व सरफेस एरिया मिनिमम होगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम ही है. Then altitude is root 2 times the radius. Is it clear? Yes, sir. Okay, so now in the next class we will do 1 or 2 questions of this same type. After that we will move to the next chapter, integration. And आपका term 1 के लिए integration तक है, integration तक. Okay. आप normally last year application of integration was also there for first term, but अभी तो जो आया हमारे पास जो एक लेटर आया है जैसे समरी से, उसमें से इंटीग्रेशन तक के आपके लिए फर्स्ट टाइम के लिए. तो नेक्स्ट क्लास ऑल्सो विल डू 2-3 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेम टाइप, दिस मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चंस, and then we will move to integration. Once you are thorough with integration, differentiation, integration is very easy because integration is the reverse process of differentiation. So it's very simple thing. In differentiation, we have studied some techniques to find the derivative. Likewise, in integration, first concept is integration is a reverse process of differentiation. So वैसे बहुत सारा result मिलेगा. In addition to that, we will study some methods to integrate functions. But ऐसे भी नहीं वो पढ़ाई करने के बाद कोई भी फंक्शन दे दो हम इंटीग्रेट कर सकते, ऐसे नहीं. Some particular method, some particular way में फंक्शन आएंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे वही हम डिस्कस कर रहे हैं. And there are functions which cannot be integrable also. So it is not like once we study integration we are able to integrate all the functions in the world. ऐसे कुछ नहीं है. So we are going to study some particular case. If the function comes like this, how to find the integral, I say. So and after that उसका application, जैसे डेरिवेटिव के बाद डेरिवेटिव का application हमने study किया, वैसे इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन का application हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. So see you tomorrow. Take care. Okay. Attendance भेज देना.